Hello, how's it going, guys? Welcome back to another podcast. It's episode 14, and today joining me is a special guest. But before I introduce him and we get on with the podcast, make sure you guys leave a like rating, make sure you subscribe, make sure you add us to your playlist. Leave a like rating on this one and support on our social media pages. And joining me today, one of my closest friends, one of my best friends. I think we became friends while fighting about cricket back That's almost correct, man. seven years ago almost. Yeah, And yeah. now I finally convinced this guy to come on the podcast, and it took an India versus Pakistan game to do it. तो बहुत सारी भाई मस्ती होने वाली है आज podcast में. Analysis is 0% होगा. But before we get into any of that kind of analysis, not analysis, but like India, Pakistan, and the main talking points आज के, talking about New Zealand, Netherlands, as well as England, Bangladesh, Sri Lanka, Pakistan, Afghanistan, India, as well as South Africa, Australia, which just happened today when we're recording this. New Zealand, Netherlands, भाई New Zealand तो बहुत strong team लग रही है. Ali, your thoughts? Top four भाई has to honestly be the नहीं न्यूजीलैंड से मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था बिल्कुल भी, to be honest. I mean, at the start of the World Cup everyone was saying England, India, Pakistan and maybe Australia, right? But hmm. New Zealand से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था. But bro, Ravindra, man, this guy is on form. This guy, I don't know what he's doing, bro. Playing amazing. Exactly, bro. It's almost like he's playing in his home grounds. This guy scored a century in the first one, 51 runs in the second one. He is, and the best part is he's bowling so well. कि he's उसने तो अपनी जगह cement कर ली. Even if Williamson comes back, he'll always be part of that team. It always Yeah. seems like, and they're doing so well without Williamson and Saudi, which is Oh kind of yeah. Bro, incredible. imagine they give Williamson back as well, bro. That would be Exactly. Santner as well, looking really dangerous. The way he kind of played that game against Netherlands. 5 wickets for him on the day, 4 wickets for Trent Bolt, if I'm not wrong, there as well. So New Zealand तो भाई हमेशा से एक strong target रही है, और dark horses we always call them on the podcast. When I always record with Suresh, we always call them the dark horses. कि भाई 4 साल न्यूजीलैंड की कोई बात नहीं करता है. You talk about हाँ. cricket in general, न्यूजीलैंड background में अपना काम करते हैं. And then Exactly. they come to a semi-final. I mean, what, 2015 final, 2019 final, 2022 Champions Trophy final. So this is perfect chance for Williamson to say, okay, bhai, every tournament I've been captain, I've led New Zealand to a World Cup final or a major trophy final. England versus Bangladesh. England convincingly beating Bangladesh, which was a surprise result for me. By just तरह से England पहले game में पिटी थी, मुझे लगा था Bangladesh might have had the upper Not hand for in me. that one. Not for me. I mean, I expected that to happen. Obviously, I was hoping a little bit that Bangladesh kuch karega. England just absolutely destroyed them, bro. I mean, yeah. I expected, honestly. Bangladesh has a bit on form. They haven't been playing very well either. You know, even Asia Cup maybe हमने देखा था. They beat India's B team, which I mean, okay. But yeah, I didn't Hmm. expect much from Bangladesh. हाँ, मेरी भी जैसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं, बट मुझे लगा था कि मे बी बिकॉज इंग्लैंड थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं ना फॉर्म में, तो दैट्स वेयर बांग्लादेश come in and sweep a win and try and get some points for themselves, which was, yeah, I guess not much to talk about that game. Pretty boring ही game था थोड़ा मेरे हिसाब से. हाँ. Nothing of a standout performance from either of the teams. It was just a general ODI type of game which you would see in cricket. But talking about the main games that we saw: Sri Lanka versus Pakistan, India versus Afghanistan, Australia versus South Africa. Starting with Pakistan, credit where it's due to every, like, I guess I'll have to say this, भाई, जब पाकिस्तानी टीम खेलती है ना तो लगता है कि भाई पाकिस्तान खेल रही है. एंड नो डाउट श्रीलंका हैज बीन स्ट्रगलिंग. साउथ अफ्रीका अगेंस्ट बड़ी खराब लॉस हुई, इंडिया के अगेंस्ट एशिया कप में बहुत खराब लॉस हुई. समवेयर इट फेल्ट नाइस टू सी पाकिस्तान द प्ले द वे दे डिड. जिस तरह से पहले 2 विकेट्स अर्ली में लूज किया, आई थिंक 60 for 2 थे, Yep. which is still quite, it's quite too early wickets when you're chasing down 330, 350 almost. And the way Rizwan handled it, Abdullah Shafiq, and you've said this, भाई मेरे इसके साथ इतनी बार conversations हो चुकी हैं कि भाई अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिला रहे, अब्दुल्ला शफीक को क्यों नहीं खिला रहे. Swear to God. तो Abdullah Shafiq. Good legend. exactly. But what are your thoughts on that game, भाई? Honestly, like, you don't expect that. मैं सच बताऊं तो जब मैंने 340, मैंने जिस तरह से श्रीलंका को देखा, मैंने कहा anything over 250 पाकिस्तान मेंटली वो ड्रेसिंग रूम में गेम हार जाएंगे, और जब वो वॉकआउट करेंगे वो कोलैप्स करेंगे. भाई देखो, आई हैव अ लॉट टू टॉक अबाउट उस गेम के बारे में, लेकिन सबसे पहले तो पाकिस्तान से अनएक्सपेक्टेड टीम तो कोई हो ही नहीं सकती है भाई. कभी या तो सोनी बनाएंगे, कभी 400 का टारगेट बना लेंगे. भाई पाकिस्तान का यही है. लेकिन सबसे पहले तो देखो, इमामुल हक के बारे में मैं क्या ही कह सकता हूँ. मतलब ना एशिया कप में फॉर्म में थे वो, ना अभी वर्ल्ड कप में फॉर्म में है. ठीक है, लोग पर्ची पर्ची कहते हैं, वो तो मैं नहीं बोलूंगा ऑफ कोर्स. लेकिन ये यू नो बहुत इट्स, ये बहुत इज्जत से बात कर रहा है इस हाँ, वक्त. मैं भी इज्जत से बात करने अगर की कोशिश कर रहा हूँ, bro, honestly. लेकिन I mean, at this point, he might as well be Perchi, right? Because why is he even in the team? What's he doing? What's his role? ठीक है, ना वो बैटिंग
कुछ भी नहीं कर रहा, ना स्कोरिंग कर रहा है, फील्डिंग में भी उसके कैच ड्रॉप कर रहा है, इंपॉर्टेंट कैच उसने ड्रॉप किया था, मतलब बिल्कुल हलवा, मतलब हाथ में बॉल उसने ड्रॉप किया, मतलब मैं तो परेशान हो गया था ये क्या। तो ऑब्वियसली फखर जमान, इमाम उल हक, बोथ आर ओपनिंग बैट्समैन नाउ इन फॉर्म। मतलब आप इंडिया के ओपनिंग बैट्समैन देखें, ऑफ कोर्स रोहित शर्मा amazing form, but we'll get into onto that later, ठीक है। लेकिन इमाम उल हक अगेन, आई डोंट नो व्हाई ही इज इन द टीम, मतलब एशिया कप में भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई है, ना अभी वर्ल्ड कप में आई है। फखर जमान, आई मीन everyone's saying कि he's on under too much pressure, उससे बहुत मैच खेला और उसको रेस्ट की जरूरत है, because he is a very good player, it's not like you can't call him पर्ची at all, बिल्कुल भी पर्ची नहीं कह सकते उनको, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, लेकिन अभी ऑब्वियसली ही नीड्स सम टाइम ऑफ, और उसकी जगह ग्रेट रिप्लेसमेंट अब्दुल्ला शफीक, नो वन एक्सपेक्टेड दैट 100, आई डिड एक्सपेक्ट लाइक मे बी 60 रन्स, मे बी he'll play well, लेकिन ये देखें आपके इमाम उल हक आउट हो गया, ठीक है, एंड देन बाबर आजम गेट्स आउट, and then Abdullah Shafiq doesn't get under pressure, still performs uska pehla World Cup match, scores 100. Of course, he had a great mentor in Rizwan, but people don't know this. A lot of people don't know this. Sorry, Rizwan का भी ये पहला वर्ल्ड कप है, हम्म। और like he said in the interview, so वो भी pressure में नहीं आया, उसने भी great essentially की despite his cramps. I mean he stated that he was faking them. We'll get into that a little bit later as well. ठीक है, that was hilarious stuff. जिस तरीके से वो गिर रहा था वगैरह, that was amazing. Our bowling is struggling really bad right now. Like इतना रन्स खाना, आई थिंक स्पेशली फ्रॉम टीम पाकिस्तान यू वुडंट एक्सपेक्ट, ठीक है, शाहीन नो इन फॉर्म एट ऑल, ठीक है, आई थिंक इवन शायद अफरीदी सेड वो बॉल ठीक नहीं कर रहा है, एक्स्ट्रास दे रहा है, रन्स खा रहा है, उसकी लाइन आई थिंक खराब हुई हुई है, आई थिंक ही माइट हैव बीन इंजर्ड, आई हैव हर्ड समवेयर दैट हिज फिंगर हम्म। swollen, समथिंग अलोंग दोस लाइंस। नसीम शाह की ऑफ कोर्स कमी महसूस हो रही है, लेकिन हसन अली ने इस मैच में तो नहीं महसूस होने दी, बिकॉज ही टुक 4 विकेट्स, एंड हारिस रऊफ अगेन पिछले कुछ मैच में बहुत स्कोर खा रहे थे, विकेट्स भी नहीं ले रहे थे ज्यादा, अब आके भी उन्होंने विकेट्स लिए हैं, एंड lot of people are saying कि शादाब को नहीं खेलना चाहिए, but he did end up taking a wicket. So overall thoughts, Pakistan was an expected team, like I said, 345, that was yeah, unbelievable performance by Rizwan and Abdullah Shafiq, and great finishing by our middle order batsmen. आई थिंक Yeah. मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे ये 3 days बिफोर द गेम जब हम लोग रिकॉर्ड कर रहे थे व्हेन आई वाज रिकॉर्डिंग द लास्ट एपिसोड दैट आई सेड भाई पाकिस्तान एक ऐसी टीम, पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो ऑन द डे श्रीलंका को इतने कन्विंसिंगली हरा देंगे कि आपको लगेगा कि दीस गाइस डिजर्व द वर्ल्ड कप, फिर उसके बाद they'll destroy themselves, so खुद ब खुद they'll mess it up themselves. So but I think generally speaking, more than anything, the most impressive part about that performance was the fact that they handled the pressure so well. It's unheard of, and I've been saying this for the last I don't know weeks on. I think Asia Cup से जब से वो सेमीफाइनल हारे थे, वर्चुअल सेमीफाइनल आई गेस अगेंस्ट श्रीलंका, तब से मैं कहता रहा हूँ कि भाई ये पाकिस्तानी टीम ऐसी टीम है जो प्रेशर के अंडर जब आती है ना बिग गेम्स में, दैट्स व्हेन दे मेस अप। और ये समवेयर मैं अभी भी बिलीव करता हूँ देयर इज स्टिल a lot of confidence lacking in these players, but obviously these two performances in Netherlands or ye performance against Sri Lanka will help quite a lot. But coming India, do I think Pakistan has fully solved their issue of handling pressure well? No, maybe not, but they're getting there. And जहां तक भाई बात पाकिस्तान की बैटिंग की आती है, तो उस दिन जब वो पहले 2 विकेट गए, आई थिंक जो स्कोर कार्ड था जो मैंने एक से मैं निकाल देता हूँ जल्दी से, 16 for 1, 37 for 2, बाबर आजम गया, ना गया, ये गेम तो गया पाकिस्तान। आई वाज लाइक ठीक I है think भाई, that 100 was के अंडर। everyone thought that, हाँ, हाँ, बिल्कुल, and then Abdullah Shafiq and Rizwan, the way they played these guys, I mean, incredible. unbelievable man. Yeah. भाई बेस्ट पार्ट था कि they didn't rush it. They knew कौन सी बॉल को पनिश करना है, कौन सी बॉल को प्रॉपरली खेलना है, कौन सी बॉल पे सिंगल मिलेगा, डबल मिलेगा, रनिंग बिटवीन द विकेट, it was completely perfect. It was unlike Pakistan. It's something that you Yeah, very don't unlike regularly see. Pakistan. Exactly. Yeah. It was a very unlike Pakistan. And credit to Rizwan यार, आज की बात नहीं है, he did it before as well. Yeah, वार्म अप गेम्स his में भी last बहुत, game. Yeah. एग्जैक्टली वार्म अप गेम्स में भी बहुत अच्छा खेला, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करी। सो समवेयर आर डू यू थिंक पाकिस्तान आर टू रिलायंट ऑन वन प्लेयर? जहां तक पहले हम लोग कहते थे कि भाई बाबर आजम एंड रिजवान खान कह रहा हूँ, मोहम्मद रिजवान दोनों पे रिलायंट है। डू यू थिंक नाउ दे काइंड ऑफ ओनली रिलायंट ऑन रिजवान, या I बाबर don't. आजम नीड्स टू Yeah, I स्टेप don't अप ऑन know. द प्लेट? बिकॉज मेरे लिए भाई बाबर आजम एक बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट रहा भाई, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट स्कोर नहीं किया, श्रीलंका के अगेंस्ट स्कोर नहीं किया। दीज पिचेस आर सो सिमिलर टू what they were playing on in Sri Lanka, the pitches that they were playing in Pakistan. भाई सबकॉन्टिनेंटल pitches से अच्छी आपको पिच कहाँ मिलेगी कहीं पे भाई? बिल्कुल नहीं, सही कह रहे हैं आप, लेकिन देखो शोएब अख्तर ने भी ये कहा था, ठीक है, और मैं भी ये बोलूंगा, बाबर आजम इज टेकिंग टू मच प्रेशर, उसको भी यही लगता है जो पब्लिक बोलती है कि उसके खिलाफ बगैर टीम नहीं है, मतलब नॉन लाइक एन एरोगेंट वे, एज इन उसको ज्यादा ट्रस्ट नहीं है कि रिजवान आके स्कोर करेगा, या आई थिंक वो थोड़ा प्रेशर में आ जाता है कि मैं आउट हो गया तो बस गेम खत्म,
ऑब्वियसली वी ऑल थिंक दैट एज वेल, लेकिन अभी जो हमारी टीम है उसको आई थिंक उसको ट्रस्ट करना चाहिए। हमारी बैटिंग ऑर्डर काफी स्ट्रांग है, अगर वो लोग सही खेलें, मतलब डम शॉट्स ना खेलें। अब्दुल्ला शफीक, हमारा मिडिल ऑर्डर स्पेशली इफ्तिखार, मतलब अमेजिंग परफॉर्मेंसेज बाय इफ्तिखार, और हमारा क्या कहते हैं सऊद शकील, मेन अमेजिंग बैट्समैन एज वेल, रिजवान अमेजिंग बैट्समैन मिडिल ऑर्डर में आते हैं। सो आई थिंक यू शुड ट्रस्ट द मिडिल ऑर्डर, प्रेशर में होकर ना खेले, आराम से खेले। ऑफ कोर्स दो, बट व्हेन यू लूज योर ओपनिंग विकेट्स अर्ली, जब आपको ओपनर बैट्समैन जल्दी आउट हो जाता है तो ऑफ कोर्स आपके ऊपर प्रेशर आएगा, एंड बीइंग अ कैप्टन एंड द स्टार प्लेयर देयर इज ऑल दोस प्रेशर्स, एंड उसको मीडिया में भी अभी बहुत कुछ लोग बोलते हैं उसको, जाहिर है। तो ऑफ कोर्स देयर इज दैट प्रेशर, उसकी वजह से वो गलत खेल रहा है। बट आई थिंक पाकिस्तान एज अ टीम, आई डोंट थिंक दे आर टू रिलायंट ऑन एनी प्लेयर एट द मोमेंट, because Shane isn't performing, Hassan Ali stepping up, Harish Rauf is stepping up, Naseem Shah injured, who was our main, like really good bowler, of course, top three, my important bowler. Uske bagay dekho Hassan Ali stepping up, and then we have our kya kehte hain batting order. Babar Azam, our star player, isn't showing up. Our middle order is showing up. Iftikhar is showing up. Iftikhar to bowling bhi achhi kar raha hai aajkal, pata हाँ. nahi. Lekin I don't think they're too reliant. I think the media says they are reliant, but I disagree with that. Well, I think we all have to sit here and say that Bauer needs to step up now. For a Yeah, team to win the World Cup, it's highly unlikely to be able to do it without their captain performing well. And I think we all know what he's capable of. By 45 plus average against most teams in the World Cup. I think certain teams against me, I think if I'm not wrong, Bangladesh or maybe Sri Lanka or I can't remember the third team, but 3 या 4 team तो ऐसी हैं जिसमें उसका average 75, almost touching 75 है. And the only average that's below 45 is against India, which is 28. So somewhere he's got it in himself to be able to do it and to produce those big scores. And I think you're right in saying कि भाई I think पाकिस्तान में एक दूसरे के अंदर ट्रस्ट नहीं है इतना कि भाई अगर मैं आउट हो गया तो अगला वाला कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. exactly. And that stems from, I think for me, that stems from an issue that's again goes back to pressure, goes back to the fact that भाई पाकिस्तान कभी कभार बहुत अच्छा खेलते हैं बट एक वही होता है कि सर्टन स्ट्राइक रेट से ऊपर नहीं जा पाते. मोस्टली प्लेयर्स, इफ यू लुक एट देयर लास्ट फ्यू इनिंग्स एंड यू लुक एट देयर स्ट्राइक रेट्स, तो आपको दिखेगा कि भाई एवरीवनस बिलो 85, एवरेज इज यूजुअली 75, 80, 85, मैक्सिमम 90 समझ लो, व्हिच इज काइंड ऑफ आज के मॉडर्न डे ओडीआई क्रिकेट गेम में अनएक्सेप्टेबल. यू नीड टू हैव, चलो ओपनर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 95, 80 खेलना, मिडिल ऑर्डर से आप कभी कभार एक्सेप्ट कर सकते हो कि भाई अगर पिच बहुत खराब है, इफ इट्स अ वेरी टर्निंग पिच देन ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट दैट. बट फ्रॉम योर लोअर मिडिल ऑर्डर, स्पेशली इफ्तिखार, मे बी सऊद शकील टू अ सर्टेन डिग्री, शादाब खान एज वेल, या नवाज को भी ऐड कर लो उसी में, यू वांट दीज गाइज टू बी एक्सप्लोसिव, जो लास्ट 15-20 ओवर्स में आके इनका काम है भाई मैं सिर्फ 150 की स्ट्राइक रेट से 140 की स्ट्राइक रेट से जितने रन मैं बना सकता हूँ बनाना चाहता हूँ. बिकॉज आइडियली भाई ओडीआई में आपको क्या चाहिए, पहले 15 ओवर में 100 बनाओ, अगले 15 ओवर में 100 बनाओ, और अगले हाँ 15 ओवर में 150, 160 बनाओ, एंड you've got perfect 350 kind of score to get it out. And देखा जाए तो भाई इंडियन पिचेस में 250 से कम का स्कोर तो डिफेंडेबल है ही नहीं. exactly. बहुत ही रेयर केस होगा कि यूर डिफेंडिंग 250, एंड देन इवन टू अ सर्टेन एक्सटेंट 300 भी बहुत सारे ग्राउंड्स में अनएक्सेप्टेबल है भाई, स्पेशली दिल्ली, हैदराबाद, यू लुकिंग एट इट you're going to get 300 भी, it's not an enough target to kind of defend as well, which I think credit to Pakistan. And in terms of bowling के भाई थोड़ा मैं disappointed हूँ पाकिस्तानी bowling से. Coming into this tournament मुझे लगा था one of the strongest pace attacks obviously है ही पाकिस्तान के पास, but I'm extremely disappointed by Shadab Khan. I think in a pitch where Jadeja, Kuldeep, you've got Welelage from Sri Lanka, you've got Rachin Ravindra, you've got so many spinners, Zampa, Maxwell, all of these guys doing so well, picking up wickets, and Shadab उसी end में he's not only picking up wickets but he's going for expensive runs as well. एक तो होता है कि भाई जैसे जो इंडिया रिलायंट ऑन जडेजा ऑन द फैक्ट कि भाई इसकी इकोनॉमी 4 या 3 रहे, तो यू हैव 10 ओवर्स वेयर द ऑपोजिशन ओनली गेट्स 3 ओवर्स पर ओवर, 3 रन पर ओवर. तो अगर वो विकेट ना भी ले, इट इज क्वाइट इम्पैक्टफुल इन अ 50 ओवर गेम. Whereas what you expect from शादाब is कि भाई विकेट्स तो ले, चलो ठीक है आपने 50 रन दे दिए आपके 10 ओवर में, या 60 रन 70 रन दे दी, बट आपने 4 विकेट लिए, देन यूर लाइक ठीक है यार इट्स फाइन, दैट वर्क्स. तो समवेयर ही नीड्स टू ईदर रियलाइज कि भाई ठीक है मैं विकेट्स नहीं ले पा रहा हूँ, तो लेट मी एटलीस्ट पुट द प्रेशर ऑन द ओपोनेंट. बिकॉज वही होता है जैसे हम लोगों ने देखा अभी तक सारे गेम्स में क्या हुआ, क्या है पहले 2-3 विकेट जल्दी जाते हैं और फिर सडनली एक मिडिल ऑर्डर या बॉटम ऑर्डर में एक पार्टनरशिप बन जाती है. और वो पार्टनरशिप क्यों बनती है, सडनली यू हैव ऑल ऑफ दीज बॉलर्स जो जिनकी लाइन और लेंथ सही है नहीं और जो प्रेशर क्रिएट कर नहीं पा रहे, और आप सिंगल्स लेते रहो और उससे आप इनिंग्स बल्क करते रहो. फिर जब एक ऐसा टाइम आ जाता है जहाँ पे आपकी कॉन्फिडेंस इतनी हाई होती है कि भाई वो बॉलर कुछ भी कर दे,
आप आराम से खेल सकते हो उसको बहुत अच्छे से. तो somewhere I think that's what something Pakistan is going to be looking at and focusing on mostly for the next few games against India as well. Moving on to India versus Afghanistan, क्या गेम था भाई. Credit to Afghanistan. पहली बात तो भाई 272 against an Indian bowling attack is not an easy score to be able to achieve. I think generally it's a very tough thing to be able to achieve, especially against Bumrah भाई की जिस तरह से उसने उस दिन बॉलिंग करा रहा था वो मुझे तो लगा था कि भाई अगर वो 3-4 ओवर और उसके होते तो भाई 8 विकेट ले चुका होता उस तक तो Match फोर में I विकेट. think sorry to interrupt you. Siraj was very expensive in that match, to be हाँ. honest. Both expensive. You wouldn't expect that from Siraj. मतलब you expect him to step up. लेकिन बुमराह अच्छे ओवर करा था obviously, लेकिन Siraj I think बहुत expensive रहा है. Even the last few overs जो 270 तक स्कोर पहुंचा भी है, सिराज अगर मारना खाता I don't think इधर तक स्कोर जाना था. हाँ, जनरली आई थिंक सिराज इज नॉट बिन. मुझे पहली बात तो मुझे सबसे बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर यही लगा था कि भाई सिराज क्यों खेल रहा है. शामी हैज गॉट सच अ गुड रिकॉर्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान. लास्ट टाइम हैट्रिक भी उसने ली थी वर्ल्ड कप में. ऑब्वियसली कंडीशंस थोड़ी डिफरेंट थी बट उसके बाद भी ही गॉट सच एन इनक्रेडिबल रिकॉर्ड. ही नोज द अफगानी बैट्समैन सो वेल के इट वाज अ ब्लाइंडर टू से कि भाई सिराज को खिलाना कोई फायदा नहीं था उस गेम में. एंड Right. ऑल इज डन इज जस्ट शैटर्ड हिज ओन कॉन्फिडेंस. अब पाकिस्तान के लिए क्वेश्चन रेज होता है कि भाई डू यू प्ले विद सिराज, डू यू नॉट प्ले विद सिराज नेक्स्ट Hmm. game, do you play with Shami? Considering the pitch that Ahmedabad is, it's mostly the same kind of pitch that India played on at Delhi. So I wouldn't be surprised if we go with the same bowling lineup against. But obviously, we'll get into that game. Before that, bhai, Rohit Sharma, as you said, openers, as far as it goes, world record in terms of most centuries by an Indian batsman, most centuries in the World Cup in general, most centuries in ODI. Bhai, जितने records I तोड़ा think उसने उसका एक सिक्स world का भी cup. अभी तोड़ दिया ना क्रिस गेल का. Yeah, that Bro. too as well. So 155 की strike rate से भाई 131 in 84 balls. I think when the inning started, I was like, भाई maybe India's gonna probably take it slow. But he went berserk. He was like, भाई आज मैं नहीं रुकने वाला, आज भाई मैं टी खत्म ट्वेंटी करके मतलब जाऊंगा. आई थिंक 10 ओवर में उनके 110 रन थे. हम्म. मतलब वो T20 बना के खेल रहा था, cause like you said 300 रन एक्सेप्टेबल नहीं है. और वो हम्म. as a captain he knows that, and as an experienced player he knows that, and I think that kind of experience, I know I'm bringing it back to Pakistan, but Pakistan lacks that kind of experience जो रोहित शर्मा विराट कोहली brings to the Indian team. तो I think as उसको पता था 300 रन ज़्यादा कम होगा, तो he just want to go for it. He was chasing actually. That made no sense. I was waiting for you to realize. I was like, एक It second. just, I don't know why. Yeah, no, but still though, he was playing like it was a T20 हम्म. game. That was incredible to watch. Yeah, but Delhi के pitch है भी थोड़ी जैसे batting preference, so you do see those kind of huge performances. Obviously, we saw the last game, South Africa versus Sri Lanka, जो हुआ था दिल्ली में. Quinton de Kock, Van der Dusen, and what's it called? Aiden Markram all scoring centuries. South Africa scoring 300, 428 on that day was one big score as well. So I think generally good practice for India, I must say. भाई अफगानिस्तान, मैं अफगानिस्तान से बहुत disappointed हूँ. I think I had good expectations from Afghanistan to at least put up a fight. क्योंकि आपके पास चलो पाकिस्तानी बॉलर्स को समझ में आता है कि भाई इंडियन कंडीशन में तो वो जीरो बॉलिंग कराते हैं. They've never played in India. 99% of those players. और लास्ट टाइम भी जब वर्ल्ड कप इंडिया में हुआ था, they played all of their games outside of India. The only one they played was at Mohali, the semi-final that they lost. And I don't think any of the players that are currently playing were part of that team. So I don't expect any of these players to have any experience playing in India. तो उनका तो थोड़ा बहुत समझ आता है कि भाई ठीक है कभी खेला ही नहीं इंडिया के. But Afghanistan players are regulars in the IPL. Granted, it's a shorter format game, but it's white ball cricket. So somewhere they are aware of what the pitches are like, whether it's Ahmedabad, whether it's Delhi, Dharmshala, जो भी है pitches में. So to see the way Rashid Khan, Mohammad Nabi, I guess Naveen as well, थोड़ा disappointing है मेरे लिए. These bowlers are very experienced bowlers. ये भी नहीं कह सकते कि भाई youngsters हैं जो अभी अभी आए हैं. So somewhere I think Afghanistan, they don't lack in their batting departments. I think 270, 250 kind of scores from Afghanistan is great scores. And if they capitalize or utilize their spin bowling really well, जो कि उनके पास बहुत अच्छा talent. I think generally you look at Afghani spinners and you say, wow, these guys are good. Especially Rashid Khan, and if he leads that bowling lineup well, Afghanistan, I would have said कि हाँ थोड़ा बहुत chance है कुछ upsets cause करने का. Maybe top 4 थोड़ा stretchable है, but at least थोड़ी कुछ games जीतने तो वही बनते हैं उनके. और मुश्किल लग रहा है मेरे लिए तो उनका. Yeah, I don't think Afghanistan is going to make it, to be honest. I think their next game is against India or Australia. किसके साथ है उनकी अगली I गेम? think Australia, इंडिया के साथ तो हाँ नहीं खेला. हाँ हाँ, sorry, हाँ, Australia, right? Australia, I हम्म. don't think they're gonna.
be Australia, to be honest. I think that's going to be Australia's opportunity to They've get some. got England actually. They've got England. Oh, they've got England. Mm. Okay, then yeah, same result. I think they're not gonna win. I think they're gonna lose that one, and I don't think Afghanistan has a chance of qualifying. I think again, Sri Lanka, Afghanistan, Bangladesh. I don't think these teams will qualify. अब इसमें बात आती है कि वो fourth spot कौन लेगा? 'Cause I think, in my opinion, Pakistan, India clear top four at Mm. least for now. As long as Pakistan doesn't choke or does a Pakistan like we like to joke about. he Uh, just he इसने इतने स्लाइटली आके पाकिस्तान को डाल दिया है टॉप फोर में कि जैसे कोई नोटिस bro, ही नहीं come on. करेगा. No, come on. Are you serious? I mean, okay, our next game, granted, is against, I think our next game is against Australia. Okay, so of course, After India, right? You know, we've got India, yes, Pakistan. yeah, after India, yeah, of course. Achha. I think even if Pakistan loses against India, we need to beat Australia, and we lost to them in our warm-up game. I know it's a warm-up game. They can, it was a super disappointing performance from our team. I think Babar scored 19 that team score match. They can. Baki overall disappointing performance. See, hopefully we don't have a repeat of that. Australia has some amazing batsmen, so our bowlers need to show. I don't want to jump too far ahead, but I was just trying to say, yeah, I think Pakistan makes top four. To be honest, Pakistan, India, 100% top four, in my opinion. आई थिंक देखो ओके जनरली मुझे लगता है कि हाँ भाई इंडिया पाकिस्तान मैंने प्रिडिक्शंस में अपनी यही बोला था कि पाकिस्तान आएगी सम वन वे और अनदर आएगी और स्पेशली आफ्टर लुकिंग एट द वे दे प्लेड अगेंस्ट श्रीलंका एंड नेदरलैंड आई थिंक जनरली दे डू हैव अ चांस भाई यू गॉट अफगानिस्तान यू गॉट बांग्लादेश टू इजी टीम्स दे कैन बीट नाउ दैट्स फोर विंस एंड देन टॉप फोर में से दो को हरा दें अगर ये मे बी इंग्लैंड क्योंकि दैट्स वन ऑफ द वीकर साइड एंड देन ऑन देयर गुड डे दे कुड डिफीट समवन लाइक साउथ अफ्रीका और मे बी यू नो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया भी अच्छा चांस है डिफीट करने का भाई क्योंकि आज साउथ अफ्रीका ने बहुत ही खराब तरीके से उनको आई गेस खेला है उनके साथ. I don't want to use that word. I want to be careful with what I use here. Yeah, But no, I, but yeah, bhai, it's embarrassing for Australia the way they're playing right now. I think they've taken over Pakistan reins. So maybe if yeah. even Pakistan lose against India, they've still got a good chance to win against Australia unless they come back to form by then because they play against Sri Lanka before that. ऑस्ट्रेलिया के देखो बहुत स्ट्रांग टीम है, बहुत स्ट्रांग टीम है। आई डोंट थिंक उनका इतना गंदा खेलना बनता है, बिकॉज आप उनके देखो बैट्समैन देखो, स्मिथ है, वार्नर है, ठीक है, एंड देन यू हैव द बॉलर्स, राइट, स्टार्क, आई मीन दिस गाय इज डूइंग ग्रेट राइट नाउ, राइट, great performance उसके last match में भी. You have Maxwell, obviously spinner के spinning pitcher, so you need to perform, you need to show up. I don't know why they're not, they haven't won yet. That makes no sense to me, but I think they might have a chance of beating Pakistan if Pakistan doesn't show up that day, to be honest. Again, depends कौन सी टीम को खिलाएंगे. Let's hope they don't, sit down Abdullah Shafiq again for whatever reason they did that. Sorry, excuse me. Asia Cup में उसने performance दी and then they had him sit down, right, which made no sense to me. Like, and yeah, I think yeah, in my opinion, my top four personally is Pakistan, India, England, and then I think South Africa, bro. I Ooh. think this is a little, yeah, I think South I Africa. think after the first two rounds of the game, maybe predictions like if I had to change something, I would say Pakistan, India, New Zealand, and South Africa. So I didn't mean England, I meant New Zealand. Yeah, I meant I yeah, think, yeah. yeah. Moving on to what's it called? The India versus Pakistan game, the main event to this kind of podcast. आजा भाई लड़ते हैं चल क्या लगता है भाई शुरू तुझे, करते क्या हैं. क्या प्लेइंग 11 होनी चाहिए? भाई okay, इंडिया okay, की, इंडिया की okay. तरफ बता. Let's चल ठीक है चल. Okay, let's start with India's playing 11. I think generally, obviously, Rohit Sharma has to start. Shubman Gill, good news for Indian fans. Is कि he भाई back? I was gonna ask you he's that. he's returned. He's returned Oh, to hi. training. I don't know if he's gonna play though. But आज Friday, Thursday he practiced for 1 hour or Oh, 2 hours. So Friday he might get a full proper session, and then Saturday oh. might be a good assessment for him. But do I think he should play or not? मेरे हिसाब से मुझे लगता है खेलना चाहिए. ये controversial होगा, but Shubman Gill should not play that game for me. I think that's because पहली बात when you go through an illness like he's gone through, you don't come back so soon and be able to play the whole thing. And weather के हिसाब से भाई देखा जाए तो बहुत सारा fatigue होगा. So why risk it and might as well go with Ishan Kishan, who's generally done well. I think last game maybe against Afghanistan he played well. It wasn't a match-winning knock, yeah, very kind of prestigious knock from anywhere, but something that you kind of expect from him, he did. So you can't really blame him out and say कि भाई ये क्यों ऐसे क्यों किया वैसे क्यों नहीं किया या ये क्यों हुआ वो क्यों नहीं हुआ, you know. So I think generally I would still go with Ishan Kishan and then obviously Virat Kohli, followed by Shreyas Iyer, KL Rahul, Hardik Pandya. I would still go with Jadeja obviously, and then
I have Kuldeep, Bumrah, and I would have Shami instead of Siraj, and then Thakur as well, because I think medium pacers के लिए it's a heaven Ahmedabad. So Yeah. for me, that's just yeah. Yeah, I think that's a good playing 11. I think you're right about the Siraj Shami part. He didn't play very well last game, so he should sit out. Shubman Gill, I also agree, and I pray कि नहीं खिलाया जाए उसे. you know, again, Rohit Sharma, he scored a great score. ठीक है, century की उसने अभी, लेकिन I think he's gonna do a Rohit Sharma against Pakistan. Get out पहले ही, ठीक है. रोहित भाई शर्मा और मैं इमामुल हक का मेंटली शुरू पहले. भाई मेरे से लिखवा लो, रोहित शर्मा इमामुल हक अर्न करो लास्ट द फर्स्ट ओवर ब्रो, दोनों ने मैं पहले ही. मैं मेंटली प्रिपेयर कर चुका हूँ अपने आप को कि शाहीन शाह अफरीदी इज रनिंग डाउन द विकेट, फर्स्ट ओवर रोहित शर्मा आउट होता है, उसके बाद ईशान किशन आउट होता है, उसके बाद केएल राहुल आउट होता है, फिर कोहली अकेले गेम बचाता है. मैं मेंटली रेडी हूँ उसके लिए. Yeah, KL Rahul has been मतलब हाँ वो insane भी. form, right? I mean, उसको एशिया कप में ऐसे परफॉर्मेंस दी, और विराट कोहली के साथ क्या पार्टनरशिप बन रही है, क्या कम्युनिकेशन है उन दोनों की, मतलब India needs one of those partnerships and Pakistan needs one of those Abdullah Shafiq Rizwan partnerships. But the thing is, Rizwan, he's a great player. He's a great player because उसका एक तो अब्दुल्ला शफीक के साथ पार्टनरशिप बनी, उससे पहले सऊद शकील के साथ दोनों ने 68 किया. तो पार्टनरशिप वाइज he'll stick with you the whole time if he's in form. Of course, he's battling some injuries supposedly, right? Um, Yeah. Again, these two, I think partnership is going to be very important. Kohli, KL Rahul. I mean, depends if India loses their wickets early. Kohli needs to stay because Kohli, Hmm. of course, record against Pakistan is just, this guy. पता नहीं क्या बन जाता है, against Pakistan नहीं छोड़ेगा. Him and Hardik Pandya. Yeah, Hardik Pandya does as well. He's another level. But you're right. By I think middle order in ODIs makes or breaks the game. अगर आपका middle order बड़ा solidly खेले ना उस गेम में, चाहे जितना भी अच्छा openers या tail आपकी कर ले, बैटिंग और बॉलिंग, आपको वो जो मिडिल ऑर्डर का जो ओवर दैट पीरियड फ्रॉम 20 to 40 जो आपको ड्रैग करना होता है आपकी इनिंग्स फॉर एज लॉन्ग एज पॉसिबल, यू काइंड ऑफ just hope for a run a ball or run a 5-6 run and over, that kind of over. That's what it takes. That's what takes patience. And I think वो आपको सिर्फ experience से आता है. And that's why I think Kohli and Rahul have been so successful in the last few kind of matches to be able to do that. Like Kohli से ज़्यादा experience किसके पास है इस Indian team में to be able to drag out exactly. the middle overs. So you're right in लेकिन saying that. that's the problem bro, like इंडिया का इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है, रोहित शर्मा आपके Mm. पास, आपके पास कोहली, आपके पास पांड्या जो ऑफ कोर्स कैप्टन रह चुका है, इतना ऑब्वियसली कोहली रोहित शर्मा लेवल का एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ही इज अ ग्रेट प्लेयर, ठीक है. एंड इंडिया हैज अनदर एडवांटेज, होम ग्राउंड एडवांटेज, ठीक है. सम पीपल आर आर्ग्यूइंग दैट थोड़ा सा डिसएडवांटेज हो सकता है इंडिया को, टू मच प्रेशर, बट I don't think India pressure लेता, to be very honest with you. Pakistan very inexperienced team, ठीक है. हमारे बेस्ट प्लेयर रिजवान जो अभी खेल रहा है, बेस्ट खेल रहा है जो, उसका भी पहला वर्ल्ड कप है, ठीक है. बाबर अभी फॉर्म में नहीं है करंटली, 2 गेम्स उसने अच्छा, आई वुडंट से इज आउट ऑफ फॉर्म, 2 गेम्स अच्छा नहीं खेला, आई वुडंट से इज आउट ऑफ फॉर्म. आई थिंक इंडिया के खिलाफ अच्छी परफॉर्मेंस देगा वो. उसके अलावा शाइन आउट ऑफ फॉर्म. सो इंडिया के बहुत एडवांटेजेस इन दिस गेम, और पाकिस्तान जस्ट नीड्स टू स्टेप अप एंड do a miracle like they usually do. Not usually, like sometimes do, sorry, because Pakistan winning like the way they do sometimes is a miracle. मतलब जब गेम हारी भी होती है, टीवी लोग बंद कर देते हैं, Yeah. पाकिस्तान इज लाइक नहीं भाई हम लोग अभी इधर हैं, क्या सोच समझा हुआ है हमें, मतलब बॉलर्स आके मार देंगे. लेकिन लेट्स सी मैन, आई होप एज अ पाकिस्तानी, आई होप पाकिस्तान डज वेल. लेकिन yeah, it's going to be an amazing game, man. I hope it's not like one sided either way. I hope Pakistan Yeah. doesn't destroy India, because देखो पाकिस्तान इंडिया का मैच कितना खेलने को देखने को मिलता है, ठीक है. Yeah, अभी you're right. पता नहीं अगला मैच कब देखेंगे हम लोग, ठीक है. Mm. तो I hope it's a very competitive game from start to end. I think it will be. So yeah, man, let's see what happens. Exactly. I was gonna kind of summarize the whole thing by this and say कि भाई मुझे interesting match से मतलब है. Obviously, I'll have an Indian bias. You'll have a Pakistani bias, and you'll want Pakistan to win at the end of the day. I'll want India to win. Yeah. But somewhere we both know that we'd rather see 6-7 hours of good cricket and have a result at the end than see a very one-sided game Yeah. where either Pakistan or India take the whole game away within the first few hours of the game. और Yeah. फिर आप Yeah. पूरे दिन बैठे फिर हुए हो कि देखेंगे क्या exactly. एग्जैक्टली फिर वो वन साइड हो जाता है, फिर वो मजा ही नहीं आता बिल्कुल भी. और यू डू गेट ब्रैगिंग राइट्स कि हाँ देखो कितनी खराब तरीके से हराया, बट वो कुछ दिन की खुशी होती है, फिर उसके बाद यू जस्ट फॉरगेट अबाउट दैट. बट यू Exactly. ऑलवेज रिमेंबर द क्लोज चेसेस. भाई एवरीवन रिमेंबर्स दैट कोहली 83 एट गैबा बिकॉज ऑफ द वे दैट हैपेंड. एंड कोई बात नहीं होता है, कोई बात हाँ सबके भाई, साथ. थोड़ा सा दुख हुआ इस बार, ये थोड़ा पर्सनल लगा ये वाला. But yeah, so I think everyone remembers that kind of game more than I think 2011 का semi-final या 2011 के पहले group stage की matches. So somewhere we all want a very close match, and Pakistan tough fight देगा भाई.
जितना भी हम लोग यहाँ पे बैठ के कह लें कि ठीक है प्रेशर नहीं हैंडल कर पाते, जितना में हम लोग कह लें कि फॉर्म में नहीं है या अनएक्सपेक्टेड है, पाकिस्तान को कुछ भी कर सकते हैं, दे आर अ टीम that have been building themselves for the last 4 years, and I know that ठीक है, they're not always on top of their game, and there's always flaws that are showing up and cracks that they've always had to kind of cover over every now and then, but they're also a team जो they're ready to give a fight. So it would be wrong to sit here for me and say कि भाई इंडिया के लिए बहुत आसान चाल, और नहीं, जहां तक एब्सोल्युटली नॉट। इंडिया एग्जैक्टली जो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अगेंस्ट, ठीक है बहुत सारे गेम्स जीते हैं हम लोग, बट कन्विंसिंगली बहुत कम बार जीते हैं रिसेंट हिस्ट्री में। पहले हो सकता है बहुत बार जीते हो, लेकिन आजकल जिस तरह से पाकिस्तान के बॉलर्स इंडिया को अटैक कर रहे हैं, मुश्किल ही लग रहा है। आई थिंक एशिया कप का पहला गेम सभी को पता है कि अगर इंडिया पाकिस्तान ने बैटिंग करी होती, दे माइट हैव वॉन दैट गेम। नहीं, एशिया कप का फर्स्ट मैच, लेकिन नॉट द सेकंड गेम वाज डिफरेंट। फर्स्ट मैच में हाँ, आवर बॉलर्स रियली डिड शो अप, नसीम दैट्स शाह व्हाट आई क्या शाहीन शाह शोड अप। सेइंग। लेकिन और सेकंड मैच में जो हमने किया था, आई थिंक वी जस्ट चोक दैट वन। लेकिन या आवर बॉलर्स रियली डू नीड टू प्ले वेल। आई थिंक हसन अली विल शो अप दिस गेम। या तो वो बहुत मार खाता है या बहुत विकेट्स लेता है। तो अभी उसका ये क्वेश्चन आ रहा था कि इज ही इन फॉर्म, इज ही आउट ऑफ फॉर्म, व्हाई डिड दे प्ले देम, और किसको खिलाएं। ठीक है, हमारी ऑलरेडी टीम में इतनी, मैं भी ऑब्वियसली इसके अगेंस्ट हसन अली को खिलाना, लेकिन नाउ दैट आई थिंक अबाउट इट, किसको उसकी जगह खिलाएं। जमान खान जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं वर्ल्ड कप का, ये इतने बड़े मैचेस का कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। क्या कहते हैं, हमारी ऑलरेडी देखो अब्दुल्ला शफीक, उसका इनएक्सपीरियंस प्लेयर, ऑफ कोर्स ही इज प्लेइंग वेल, लेकिन आप पूरी टीम को इनएक्सपीरियंस बना देंगे तो पूरी टीम प्रेशर में आ जाएगी इस तरह। और बॉलिंग्स गोना फॉल अपार्ट और बैटिंग्स गोना फॉल अपार्ट। ठीक है, we need some experienced players in there, whether they perform amazing or not. ठीक है, we talked about India's playing 11, let me tell you what Pakistan's playing 11 Sheffield। तो चलो, पहले तो मुझे जैसे ही मैं ओपनिंग की just बात to करता हूँ मैं। just before you get to that point, I want to emphasize on the point you made and add on to your point. I think generally पाकिस्तान की बॉलिंग में अगर कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो ये चाहिए कि भाई ठीक है आप विकेट्स नहीं पिक कर पा रहे हो, लेट्स से कि आप विकेट्स नहीं ले पा रहे हो, जो कि आई थिंक पाकिस्तान प्लेयर्स जनरली विकेट्स ले रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं ले और भी पा रहे। खा रहे हैं ना। हाँ, बट वही है एग्जैक्टली कि विकेट लेने के चक्कर में वो ये भूल जाते हैं कि वो ऐसी ऐसी बॉलर डाल देते हैं जो रन्स मिल जाते हैं ऑपोजिशन को। एंड एग्जैक्टली। समवेयर एज अ बॉलर आपके माइंड में ये होना चाहिए, स्पेशली लेट मी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट श्रीलंका गेम। जब मैं नोटिस कर रहा था वो जो पिच थी, हैदराबाद हैज वन ऑफ द मोस्ट टर्न्स इन अ पिच। ठीक है, 3.5 to 4 डिग्री ऑफ स्पिन एंड स्विंग है इन दैट पिच, दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इन इंडिया। It's as good as Chipak in Chennai as well as Eden Gardens in Kolkata. So when I read this and I was looking at Pakistan's line and length on that day, Shaheen Shah Afridi 50+% balls uski Yorkers thi and full balls thi, where he wasn't utilizing the pitch. Hassan Ali on the other hand was bowling short balls, was bowling mid wicket balls, mid length, chest में मार रहा था, शोल्डर में मार रहा था, आपको बैटर को इनॉय कर रहा था, एंड ही पिक्ड अप विकेट्स ओवर देयर। वहीं पे शादाब खान को अगर आप देखो, ही वाज बॉलिंग कंप्लीटली फुल बॉल। उसकी पिच मैप आप देखो, इट्स फुल यॉर्कर राइट नेक्स्ट टू द बैट्समैन, नॉट यूटिलाइजिंग द पिच। तो समर पाकिस्तानी बॉलर्स को खुद एक रियलाइजेशन होनी चाहिए कि हाँ मे बी ये टैक्टिक नहीं चल रही है, क्योंकि हर 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 मैच में तो भाई शाहीन अफरीदी नहीं आके पांच यॉर्कर पर ओवर करा के 2 विकेट लेके चला जा सकता है। यू कैन डू दैट। Maybe with a new ball you can do that, but somewhere you're gonna have to change your tactics or शाइन teams की and players. पेस Shine की pace भी last match, I mean, took a big hit. He was bowling 138, and even the commentators were saying कि मतलब मैं ये Hmm. extras भी बहुत दे रहा है, bowling भी full कर रहा है, ऊपर से balls slow भी आ रही है, मतलब not as fast as we're used to, right? लेकिन Ramiz Raja was saying, he showed me his finger, it was swollen, so that might be a big factor in why he's not bowling well, or maybe I don't think he's coming under pressure. Shine, of course, we've I seen don't him think perform. pressure. Yeah, I don't think Yeah, pressure. I don't think pressure. I think he's just not in form right now. So Yeah. hopefully he comes back India के खिलाफ. And the best part is you guys have a brilliant coach in Morne Mokal. Who else better Yeah. to have guide these kind of guys? So and he's also Morne Mokal, someone who's coached the CSK team as well for quite a while. So as well as played a lot of IPL. So he's got a lot of experience of Indian pitches. So Pakistan को ये utilize करना चाहिए. And I think India के against focus more on, let's say कि भाई next over I want to only give away 3 runs, 2 runs, 4 runs. ठीक है, wicket नहीं आएगा next over, but let's only give them 4 runs. Let's only give them 3 runs. Make them play aggressive. Wickets आपको कैसे मिलते हैं? जब आप बैट्समैन को प्रेशर में डालोगे, जब आप उसको सिर्फ 2 ही रन बनाने दोगे ओवर में, 3 रन बनाने दोगे, वो ऑटोमेटिकली एक आपकी बहुत जबरदस्त बॉल को लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ कहीं भी मारने की कोशिश करेगा, और उससे आपको कैच विकेट मिलेगा या स्टंपिंग मिल जाएगी, जो भी मिलेगा, व्हाटएवर फ्रॉम देयर। बस वही है कि अगेंस्ट श्रीलंका व्हाट दे वर डूइंग इज, श्रीलंका को इतनी आसानी बॉलिंग मिल रही थी कि भाई मिड ऑन पे मारा सिंगल ले लिया, मिड ऑफ पे मारा सिंगल ले लिया, और वो सिंगल सिंगल करके वो 5 रन 6 रन ओवर पे आ रहे थे। ठीक है हम लोग क्यों करें, वाई टेक द रिस्क। एंड
we saw that quite well against Sri Lanka. I guess Sri Lanka did that quite well. So somewhere they'll have to do that. And then Shadab Khan as well. I think I'm quite disappointed by him. I expect a lot more from him because I think he's the main spinner for Pakistan. तो ऐसा भी नहीं कि उनको drop कर दे game के लिए किसी और को खिला ले. He gives you that 10 overs of spin, but they're not utilizing it well. So yeah, sorry, go for it. Playing 11 Pakistan. नहीं, Let's you're see. एब्सोल्युटली राइट। मतलब रन्स आई थिंक अगर बचेंगे तो ओडीआई में आई थिंक स्पिन के वक्त बचेंगे, वरना आपके पास फास्ट बॉलर्स आई डोंट थिंक इतने रन्स बचा पाएंगे। क्या कहते हैं, शाहीन शाह ऑफ कोर्स ही नीड्स टू बॉल वेल, मतलब उसको ही नीड्स टू फाइंड दैट स्पार्क बैक। बट लेट्स टॉक अबाउट द प्लेइंग 11। मतलब इवन स्टार्टिंग मेरा दिमाग घूम रहा है कि मतलब ओपनिंग किससे करवाएं। अब्दुल्ला शफीक तो 100% खेलेगा, ठीक है, ऑफ कोर्स ही हैज टू, अनलेस ही इज इंजर्ड, राइट। इफ ही इज नॉट प्लेइंग मैं तो देखूंगा ही नहीं भाई, ठीक है। फखर जमान, ठीक है, या इमाम। अब आप किसको खिलाएं? सम पीपल आर सेइंग इमाम को खिलाओ, सम पीपल आर सेइंग फखर खिलाओ। भाई दोनों फॉर्म में नहीं है किसको। अब ये सिलेक्टर्स पे बात आती है कि भाई आपने बंदे क्या रखे हैं। फखर जमान टीम में बनना समझ आता है, ही प्लेज वेल, पर अभी फॉर्म में नहीं है। उसकी जगह आप एक और बैट्समैन रख लें, आप किसको हम ओपनिंग करवाएं? ठीक है, बाबर आजम यूजुअली प्लेज वन डाउन एंड ही प्लेज वेल, उसको तो ओडीआई में आई डोंट थिंक ओपनिंग कराना इज अ स्मार्ट चॉइस, टू बी ऑनेस्ट। आई डिड थिंक दैट एट फर्स्ट सेकंड, we need good openers, but to be honest I think we play Fakhar Zaman. I know that's very controversial because he's not playing well, he's playing stupid shots, but I think Imam ki jagah Fakhr is better, he's smarter. I think those two should start definitely batting mein, theek hai। of course Babar Azam khelega, Rizwan hopefully plays if he's not injured, क्या कहते हैं, साउथ शकील खेलेगा, क्या कहते हैं, इफ्तिखार और हसन अली। और यहाँ पे बात आती है मोहम्मद वसीम को खिलाने की। आई थिंक जमान खान अ बेटर ऑप्शन, टू बी ऑनेस्ट पर्सनली। एशिया कप में भी ही डिडंट गेट अ विकेट द लास्ट गेम अगेंस्ट श्रीलंका दे प्लेड, लेकिन उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की अंडर प्रेशर। ऑफ कोर्स लास्ट ओवर में उसने रन दिए, बट दैट वाजंट हिज फॉल्ट इन माय ओपिनियन। एक चौका गया एज, एक चौका गया मिसफील्ड, या फील्ड सही सेट नहीं की थी। आई थिंक जमान खान शुड बी गिवन अ चांस। उसकी जगह ऑफ कोर्स हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, और आई थिंक दैट शुड बी आवर टीम। फखर जमान, not a lot of people are saying he should play, but in my opinion he should definitely play. Yeah, that's my playing 11. I think Hassan Ali has a chance here. I think Hassan Ali is going to do the best here. I know a lot of people expect Shine to do it, and I hope Shine does well. Lekin mere hisab se Hassan Ali is going to shine in this match. Hassan Ali and Harsh Rauf, of course, those two are going to shine. So yeah, what's your prediction for the game? I would have you know, by the way, Zaman Khan isn't in Pakistan squad, Isn't he? so No, I'm pretty sure he's reserves in, but he's have by Yusko. but you can't use your Yeah, reserves unless you injure someone. yeah, So that's true. Yeah. yeah, ये you'll भी have मसला है to भाई। वसीम को तो I don't think he exactly. should have played, but I mean it is what it is. You can't really, ऐसे तो अगर ऐसे बात करते रहे तो मतलब ये भी कह सकते हैं नवाज की जगह इमाद को होना चाहिए था। because नवाज isn't playing amazing. बैटिंग उसने उस दिन थोड़ा सा ठीक स्कोर किया था, लेकिन बॉलिंग चाहिए आपको। I think Hmm. इमाद would bring that out to form भी नहीं है इमाद, मतलब he's not injured, he's even saying मुझे क्यों नहीं खिलाया भाई, और people are saying इमाद को खिलाना चाहिए था, but they're playing Nawaz. It is what it is. मुझे तो उसकी बॉलिंग इतनी स्पेशल लगती नहीं है, to be honest। मतलब मैं जब स्पिनर्स इमेजिन करता हूँ, मतलब लास्ट पर्सन you'd imagine to ball the best spin in our team is Iftikhar, and he's bowling Hmm. the best, मतलब विकेट्स ले रहा है, ठीक है, and then Economy भी बहुत low है वैसे. He's yeah, averaging an economy of 4 or 3 per game. we need a spinner like Rashid Khan, bro, and उस तरह के कहाँ से आएंगे? मतलब of course Shadab's not performing, we need an Imad in our team, right? I think Imad would have been great, but अब आप क्या कर सकते हैं, right? We need to work with what we've got. Hopefully Nawaz, Shadab, these guys play well, since spin काम आएगी काफी, but hopefully we don't get smacked. But my prediction, I don't know, man. I'm very on the edge here, but I think it's honestly, it does come down to, I think it's either Pakistan's going to choke or India's going to choke. What That's what you're saying happens. one of the teams is gonna choke. Yeah, I think they're gonna, देखो मुझे लगता है कि ओपनिंग हमारे एक लाइन टीम की ओपनिंग खराब होगी। आई थिंक Hmm. इफ रोहित शर्मा को पहले आउट कर दो, इफ यू डोंट गेट हिम आउट, बस गेम गई, ठीक है, यू नीड टू गेट हिम आउट। आई थिंक वन ऑफ द टीम्स आर गोना प्ले वेल। बॉलिंग आई थिंक इंडिया की अभी स्ट्रॉन्गर है, व्हिच यू वुडंट एक्सपेक्ट दैट, बिकॉज़ पाकिस्तान हैज शाहीन अफरीदी एंड हारिस रऊफ, बट इंडिया हैज बुमराह, हुज अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस बाय हिम। सिराज भी, आई मीन इफ दे डू प्ले सिराज, व्हिच आई थिंक दे विल, टू बी ऑनेस्ट, आई डोंट थिंक शामी को खिलाएंगे। सिराज भी आई थिंक विकेट्स लेगा। सो आई थिंक पाकिस्तान, इंडिया's bowling attack is stronger at the moment, the way they're playing. Yeah, I think I want Pakistan to win, but just something in my brain is telling me India's gonna take it, man. Just I hate to accept it, but yeah, I hope not, though. I hope not, of course. I think the X factor होगा for India is going to be Shardul Thakur and Hardik Pandya. They've been in great form at Ahmedabad, and And Ahmedabad की Kuldeep अगर Yadav, bro, come on. Kuldeep, I was just talking about the X factor because मैंने ये Oh, देखा right, है. right, right. Generally, medium pacers do quite well at हाँ, Ahmedabad. हाँ, But talking about Ahmedabad specifically,
आई जस्ट रिमेम्बर कि भाई शुभमन गिल का वहाँ का एवरेज, अगर किसी को याद ना हो तो वो है 107 का एवरेज है उनका लास्ट 4 इनिंग्स के. सो दैट्स एन एवरेज पाकिस्तान विल बी लुकिंग एट एज वेल. बट यार जो भी होगा भाई बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाला है. इट्स गोना बी वन ऑफ अ काइंड गेम. यू डोंट गेट टू सी इंडिया और पाकिस्तान प्ले एट देयर होम कंट्रीज, बट Yeah. it'll be a good opportunity. It doesn't, for 130,000 me, crowd. for me personally, it's not even feeling like Pakistan's playing in India. I mean, the support they're getting. I saw this crowd में camera pan किया था. There was this guy wearing an Indian jersey with a हाँ. Pakistani flag, right? So obviously there जो भी controversies we're not going to get into that. Pakistani fans को visa नहीं मिल रहा, but it feels like Pakistani fans आए हुए match देखने. They're chanting Pakistan, Pakistan, right? It's like they want that Pakistan India to like do as best as they can, right? Yeah. So that's honestly amazing to see the way they receive the Pakistani team. Doesn't feel like they're in Yeah. a different country, honestly. Exactly. But I think on that day you'll be able to notice it. By Of course, of 130,000 is a course, of lot of course, fans, and, of and I don't course. think any seat will be empty on that day when Let's we talk about hope, that. man. Let's hope. But Yeah, yeah, exactly. I want a full stadium, I want a full crowd, and it'll be very interesting. Very full capacity by India Pakistan dekhne mein. Bhai, it's a league game. The result might not matter as much as we're thinking about, maybe, or the hype is about. But obviously, India Pakistan, my greatest sports rivalry, yeah. whether it's in cricket, whether it's in any other sport, but specifically in here as well. But that's going to be our cue to end this episode. It's been a good discussion. And make sure you guys leave a like rating on this. Make sure you subscribe to the podcast. Make sure you add us to your playlist. Bhai, likes दबा दो इस podcast में ताकि मैं इसको दिखा सकूं कि he's actually good at discussing cricket and being on podcasts, because I've been trying to get him to do one for a नहीं very, भाई very देखो, long time. ये तो बात मुझे पता है कि I'm a better sports journalist than you are. I mean, that's just देखो, I don't want to show you up on your own podcast, bro. इसका मजा नहीं आएगा. लेकिन yeah, man, thanks for having me on. It's been fun, bro. It's been fun. Yeah. Yeah, no, it's just been fun. India Pakistan is always a great conversation to have with anyone. But yeah, best to do it with someone that I've always fought about. India, मैंने इससे हमेशा कहा, मैंने कहा भाई मेरी हम लोग की दोस्ती हुई थी इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में. हम लोग को लगता है कि कभी अगर दोस्ती खत्म भी होनी होगी तो ऐसी होगी, इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई की वजह से होगी. Yeah. But yeah, no, it's Yeah. been it's been it's been an incredible talk. But all of you guys watching, hope you guys enjoyed. Make sure you comment below what your predictions are by India Pakistan, biggest game of the year coming up. And then obviously, if both the teams qualify, we might see each other in the semi-final or even in the final. Bhai, koi bharosa nahi, kuch bhi ho sakta hai. It'll be very interesting. But yeah, thank you guys for watching, and we'll see you guys next time. Until then, stay safe, and we'll see you next. All right, man. क्या बात